unites the country, and any decision related to a national league must always reflect the larger national sentiment. The BCCI, as the apex cricketing body, has taken a decision after considering the prevailing situation and the public concerns. And we believe that sport should promote harmony, but it cannot remain completely detached from ground realities, especially when there are so many emotions of citizens involved. At a time when individuals play, they should not become targets for political or social issues that are beyond control. So we respect the autonomy of the sports institutions and trust that every decision is in the best interest of the game and the nation, both. बीसीसीआई क्रिकेट के एपेक्स बॉडी है। क्रिकेट एक पैशन है पूरे देश में, लेकिन जब कोई भी निर्णय लिया जाता है तो नेशनल लीग और नेशनल इश्यूज को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे पब्लिक क्रिकेट एक पैशन है जहां देश के हर एक रहवासी जुटते हैं। नेशनल लीग्स में हमेशा ये समझना चाहिए कि लार्जर नेशनल सेंटिमेंट है। बीसीसीआई एपेक्स बॉडी है और जब कोई भी क्रिकेटिंग बॉडी है जहां निर्णय लिया जाता है तो वो निर्णय उस परिप्रेक्ष्य में जब ग्राउंड रियलिटी में कुछ गलत है या कुछ अलग है, जैसे कि हम बांग्लादेश में देख रहे हैं, तो वो इमोशन भी उजागर होता है। तो जब रिस्पेक्ट करते हैं ऑटोनॉमी ऑफ स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन, साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि बेस्ट इंटरेस्ट गेम का क्या है और बेस्ट इंटरेस्ट देश का क्या है, और उसको नजरअंदाज न रखते हुए ये निर्णय लिया गया और हम स्वागत करते हैं ऐसे निर्णय का। It is not for us to opine on Ajit Pawar's issue, but no one is saying that a person becomes guilty the moment an FIR is registered. Our constitution clearly believes the due process of justice. However, it is equally important to uphold moral responsibility in public life too. When there are serious allegations that are involving leaders, we must show accountability and sensitivity towards public trust. But Maharashtra expects transparency, clean governance, and higher standards from all of those in power. So political convenience cannot be justified in the name of legal technicalities alone. Having said that, the public watches, the public decides, and the government focuses only on development, law and order, and credibility. So let's focus on law and order and credibility, and those who believe that politics must also be respected, so must public sentiment. कोई नहीं कह रहे हैं कि आप गिल्टी जब आपके प्रति एक एफआईआर रजिस्टर होता है, लेकिन हमारे संविधान का विश्वास है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए। इक्वली इम्पोर्टेंट है कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए पब्लिक लाइफ में। जब भी कोई गंभीर एलिगेशन है वहां अकाउंटेबिलिटी, सेंसिटिविटी की आवश्यकता है, लेकिन महाराष्ट्र ने हमेशा विश्वास किया है ट्रांसपेरेंट, क्लीन गवर्नेंस और हाई स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक लाइफ। तो उस परिप्रेक्ष्य में लीगल टेक्निकलिटीज ही जताएगी कि क्या है सच्चाई। First of all, we must understand that viral videos can be misleading. It is not seen with full context, and the Speaker of the Maharashtra Assembly holds a constitutional position that has always acted within the framework of law. Maintaining law and order during nomination process is a responsibility of the administration, not of political interference. And it is unfortunate that the opposition is trying to create a controversy based on selective clips instead of waiting for the facts. If anyone has objections, there are constitutional bodies like the Election Commission to look into the matter. Threats and intimidation are serious allegations and should not be taken lightly. We believe in transparency and due process of law, and truth will come out after a proper inquiry. So politics should not be played at the cost of democracy.